So it's a Kashmiri being tortured outside Kashmir, for example Delhi or some other place. He's saying to her, "I'm fine, mom. It feels like home here. Don't worry." On the 21st of August 2011, the Indian state made a historic announcement. The State Human Rights Commission admitted to 2,156 unidentified bodies from 38 grave sites in Kashmir. Kashmiris allege the proliferation of such unmarked graves over the past 2 decades. They are scattered across the valley, secured in tightly controlled areas occupied by the Indian Armed Forces. This announcement is one of few acknowledgements of crimes committed by the Indian state against the Kashmiri civilian. While it's a small step towards winning the trust of the Kashmiri, it represents a significant departure in the rhetoric of the Indian state. Yet 20 years of misinformation by government and corporate media have ensured that this historic admission has had little impact on mainstream discourse in the rest of India. Most Indians like myself have been kept at a distance from the trauma of our fellow citizens in the Valley of Kashmir. While shooting my previous documentary film, Inshallah Football, I travelled across the Kashmir Valley gathering impressions and research materials. I soon realized that this was an opportunity that only a few have had, to meet the people of Kashmir and hear their stories firsthand. This film is created from the footage I shot during that period. एम्बुश दिया उन्होंने। आपके पास वेपन था? पिस्टल था मेरे पास। पिस्टल था। क्या उम्र थी आपकी? उस वक्त 23। मैं वो ज़माने की स्ट्रेटजी इनकी कह रहा हूँ 93 की। जो ही आदमी को पकड़ते थे ना, बस 10-20 मिनट 25 मिनट पहले 25 मिनट इतना 3rd डिग्री टॉर्चर करते थे ताकि ये उगल पड़े क्या है इसके पास। बिल्कुल न्यूड तो हो गई। पहले उन्होंने मेरी चप्पल थी, उसी चप्पल से तकरीबन 50 बार मारा मुंह पर। नाम कुछ नहीं बताया, आप क्या हो क्या करना है। एक तो बाजू 2 बांध दे जाते थे और नीचे से टांगे सर, एक कुर्सी साइड में रखी जाती थी, एक ही साइड में डंडा बीच में से लाया जाता था लोहे का, तो ऊपर से एक बंदा फौजी सर बैठता था एक तरफ, लाठी बरसाते थे पैरों पे खाली, तो मेरा पैर भी सर टूटा हुआ है। फिर इसने मुझे वो इंटरव्यू सेंटर में पहुंचा दिया। उधर मैंने एक बहुत बड़ी कैंची देखी, बहुत बड़ी कैंची, वो 2 हाथों से चलाते थे। इसने वो आग में डाल दिया और फिर इसने मुझे काट दिया, काटना शुरू किया। इधर काटना, इधर भी काट दिया। सब कुछ मतलब मेरा जिस्म लहूलुहान हो चुका है। आप ऐसा करो, आप हाइड दे दो, यहाँ पे कहीं हाइड होगी नहीं। मैंने कहा उधर होगी जंगल में, चलो ले जाओ, मुझे जंगल में दिखाऊंगा कहाँ पे। कहा नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, पता था मुझे ये नहीं जाएंगे वहाँ पे, डर थे। बाल्टीन के अंदर पानी और मिर्ची मिलाते थे सर, वो पिलवाते थे। पिलवाते थे जी। तो जब फिर वो पेट खुला हो जाता था पी के, तो ऊपर से लाठी चार्ज होती थी। हम कोशिश करते थे अब ना पिया जाए, फिर बाद में वो यहाँ से धक्के मारते, लात मार के पानी वापस निकालते थे। फिर उल्टा, जी, फिर उल्टा बांधते थे ऊपर, तो पानी सब वापस निकलता था। वो पीछे वाली सुराख जो है उनमें वो पेट्रोल डालते थे। रात में वो 3 बोतल डालते थे। पीनस में और मुंह में एक, यहाँ एक ही। कुछ पता नहीं, ऐसे मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या होता है मेरे साथ, क्या हो रहा है। इससे क्या होता है जब पेट्रोल डालते हैं, क्या होता है? वो इसी खुदा ही जानता है इसको क्या होता है। आग ही मतलब जैसे अंदर मतलब
इधर से ना इधर आदमी तक जी आग सकता ही है ना आग, मर सकता है, बस ये आग ही ऐसा आग। तड़पता है इतना कि वो बहुत पेट्रोल के बहुत साथ राहत वो मिलती है। बिना एक दिन उन्होंने लगा ये कि यहाँ पे पूरा डाल दिया पेट्रोल, पेट्रोल लगाया तो लगाई तीली पूरा यहाँ पे, तो फिर जल्दी पानी फेंका ऊपर से, यहाँ पूरा यहाँ पे चमड़ी वो जल गई। गैस आप अपने तजुर्बे के तौर पर आप थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ पे रख दीजिएगा, फिर नाक से सूंख ले, नाक से सूंख ले, और ये कोई ज़्यादा मसला नहीं है। फिर वही वो जो आप महसूस करोगे, अब वो उस चीज़ में महसूस करना कि इन चीज़ों में से मतलब एक लड़का उन्हें रात को लाया था, लड़का है उसको यहाँ लगाया, वो क्या बोलते हैं लोहे की तार लगाई इधर इधर पे, लोहे की तार से लड़का है वो, हमें फिर भी वो रस्सी से उसको लोहे की तार से, वो उसके किताब मुताबिक तकरीबन रात के 3 बजे हैं, तो उसने कुछ आवाज़ सुनी, हाथ वहीं रह गए, वो नीचे गए, हाथ ऊपर वो नीचे, और फिर कल पता ही नहीं यहाँ पे कोई मर गए। जितने भी जहाँ पे केस हैं ना, जो मतलब कहते हैं गुमशुदा है, वो सब ऐसे ही हुए थे। इन्हीं चीज़ों का, इसी इंट्रोगेशन का शायद नतीजा है, जितने भी रिकॉर्ड में है ना डिसअपीयर हुए हैं, मतलब उनको न कहाँ गए, वो तो बहरहाल मारे ही गए, ये मैं वो सुख से कह दूँगा। सही बात है। जिसको भी उन्होंने पिकअप किया, 3rd डिग्री टार्चर किया, अगर वो मर गया तो इन्हें जिम्मा ही नहीं लिया, हमने उठाया नहीं। अरे यार हमारे सामने उठाया, उसकी माँ चला रही है, उसके पिता चला रहे हैं, भाई हमारे सामने उठाया है। कल तक तो आप जिम्मा ले रहे थे, कल ही आपने बताया कि चलो सवेरे देख लेते हैं, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि ये इन्वॉल्व है, तो आप सवेरे कह रहे हैं कि हमने उठाया ही नहीं। So this is first day of adventures in Kashmir. I'm doing the tourist thing. Pari Mahal, created by Mughal emperor, or not emperor, Dara Shikoh. And that's Dal down there. And way up there on the other hill is Akbar's fortress, which is Hari Mahal, which has got an army garrison inside, so we can't visit it. Hoshe, 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 Valomyan. I can't sing the whole thing, but that is, she's calling her lover. They're very plaintive, they're sort of Yes. sad. Because she was separated from her love. He, as you know, was exiled and imprisoned in the fort of Allahabad by the Emperor Akbar. After having come for what he believed was negotiation with the Emperor. If you've been to Gurez, you would have seen the Habba Khatun Ka Pahar, and that is where she sang. And you can imagine when you see the Habba Khatun Ka Pahar, and imagine the plaintive voice calling out from there. It's a beautiful image. مدنو
सुलहुमा रोशे रोशे. The capture of King Yusuf Shah in 1586 is viewed by Kashmiris as a betrayal, one that characterized subsequent occupations that continue till today. In August 1947, the British colony of India was partitioned. The nations of India and Pakistan came into existence. Jammu and Kashmir wedged between them. It was an independent state, ruled by a king, the Maharaja of Kashmir. Barely a few months later, Pakistan invaded Kashmir and India intervened, repelling the invaders. Since then, Kashmir has been at the heart of a bitter dispute that has led to 3 wars between the now nuclear nations. In the cacophony, the will of the Kashmiri people has been smothered, their aspiration for self-determination ignored. The elections of 1987, 400 years after the capture of King Yusuf Shah, is that other defining moment in the Kashmiri struggle for self-determination. तो 87 में यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, आम इंतखाबात हुए थे यहाँ कश्मीर में. कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मतलब एक डेमोक्रेटिक तरीके से मतलब मैदान में आया था, जो उनका मतलब मैनिफेस्टो था कि हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से मतलब कोशिश करेंगे जो मसले कश्मीर है इसका सलूशन. इट वाज अ जेन्युइन प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस. इलेक्शन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस. उसमें 2 कैंडिडेट आ गए हैं, एक मुस्लिम मुत्तहिद महाज का था, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था. हमने मुस्लिम मुत्तहिद महाज के कैंडिडेट को चुना, उसको वोट डाले हैं. उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, शायद यहाँ पे पाकिस्तान बना रहे हैं. तो जिस वक्त हम लीड ले रहे थे उधर से, तो हमको मतलब अचानक वहाँ से मतलब जो फोर्सेस थे उधर मतलब डिप्लॉय थे, उन्होंने हमको घसीट के बाहर फेंक दिया, रगड़ रगड़ के मारा बाहर. उसने सीधे कह दिया उस टाइम कि नहीं कोई साला नहीं जीत रहा है. दिस आर द वर्ड्स, फेंको इन बहन चौधों को बाहर, फला नहीं जीता है. कर दिया ऐलान उसका. नीचे तो हमें उस वक्त तक मैसेज मिल रही थी कि भाई जीत रहा है कैंडिडेट इस तरह. My own feeling is that there were certain seats that were tampered with or rigged, whatever you would like to call them. But this cannot be said universally of the elections. क्योंकि जवानों में एक जोश भी होता है. मतलब मेरे एज के जवान थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज यही एज थी ऑलमोस्ट जवानों की. They felt that they were not going to get that freedom in an elected democracy. They had not been able to get it, and therefore they must be rid of India altogether. तो वही लड़के जी, मिलिटेंसी कहाँ से स्टार्ट हुई ये मेरे कहना है. वही लड़के जिनको 10 दिन जेल रखा गया, 15 दिन जेल, उन्हें सीधे मेहमान खाने में नहीं रखा गया है. मतलब जेल उनका मतलब था कि इनके. तो उसके बाद क्या था, ऑप्शन क्या था हमारे पास? उसके बाद जब लड़के वहाँ से जेल से निकल आए, उनके सामने लगा कि कुछ यहाँ पे कब कोई हमारे लिए कोई. हमने इनिशिएट किया कि हम बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएंगे पीओके में. हम कुछ ना कुछ, क्योंकि उस टाइम मतलब अफगान वार चल रही थी, अफगान प्लस रशिया. हमने बोला कि हमारी कुछ उधर शायद बात बनेगी. If you take it in context, what they were demanding was simply freedom, and the freedom which they thought they had got, but found that they had not. So all that you really require is a completely free democracy, which the rest of India has come to take for granted. But they have unfortunately not been able to relish in its fullness. तो उस टाइम मतलब हमने ये सोचा था शायद 6 महीने या 1 साल तक मतलब हमारा ये मतलब फैसला हो जाएगा. हम इधर थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लेवल को मतलब यही हमारी सोच थी, कश्मीरी सारी कौम की यही सोच थी कि जब ये वायलेंस हो जाएगी, मतलब बंदूक चलेगी यहाँ, तो इंडिया ये मजबूर हो जाएगा, ये आमने सामने टेबल पे आके ना बात करेंगे. मगर वैसा तो नहीं हुआ फिर. So we never distinguished. We equated the leadership of the pro-Pakistani element with the pro-Azadi element, and therefore we actually
helped in decimating the pro-Azadi element and in promoting the pro-Pakistani element, because the pro-Pakistani element was better armed, better funded, better supported. The pro-Azadi element had no other support at all. Initially, they had depended upon Pakistani support in the manner that I said. I mean, with when the I hear you Prime speak, Minister of it Pakistan. sounds like India never really had a policy for Kashmir. It just sounds very reactive. Is that what you would say? Yes. I have no hesitation in saying that. कैच एंड किल ऑपरेशन चल रहा था उस ज़माने में। तो शुक्र अल्लाह का कि उससे बच गए, घर में अरेस्ट हुए। तो जेल से छूटने के बाद भी फिर कई बार मेरा टॉर्चर हुआ। एक तो वो होना ही था, जो पकड़ा गया तो उस टाइम तो होता ही, वो तो तोहफे के तौर में मिलना ही था। लेकिन उसके बाद जो टार्चर हुआ, जेल से जब मैं सज़ा काट के आया, उसके बाद जो टार्चर हुआ, वो मैंने समझा वो फिर से नाइंसाफ़ी हो रही है। The only state in India which actually voluntarily acceded to India, when it had a clear choice, because you had the Pakistani army inside the place. The leadership could have said, yes, well, we accept that now this is a settled matter, we are part of this country. They did not do this. They resisted it. Please note, this is forgotten. They resisted it. Yet, that state is the one state which rises in insurgency against India in 1990. So surely, you would say that, well, somehow we have failed. Then I understand the extent of the problem. I also know that I don't have a miracle solution that is available to me. And I'm going to have to chip at it one brick at a time. But I'm willing to do that, and that's it. You heard this man's story. Do you have anything to say back to him, or is it something that you obviously are well aware of him and thousands? Well, I've never had the opportunity to hear it firsthand, but that hasn't meant that I'm not aware of cases like his, and there's a lot to be expected from the policy that we have. The Maharaja of Kashmir's family belongs to the Dogra community from Punjab. They purchased Kashmir for 7.5 million rupees from the British in 1846, but had little in common with the Kashmiri, whose culture had evolved over centuries of relative isolation. Buddhism, Hinduism and Sufi Islam bred a syncretic, inclusive religious temperament. A galaxy of Sufi saints, beacons of peace and tolerance, shining from shrines in the high mountains. As a result, minority Hindus and majority Muslims developed Kashmiriyat, brotherhood. The Maharajas drew upon the minority Hindu community, otherwise known as the Kashmiri Pandit, to administer their state. Because the Sufi shrine kind of prayer is different. You would see majority of non-Muslims also there, because it was a universal prayer. La 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 la. Like lots of times when it used to be in mosque, I would just get confused. Is it our big day or their big day? Because it was same. Like because words you can't Sanskrit, you can't understand Persian, you can't understand, but music is same. So it used to be like that. When did you realize that you were a Pandit and somebody else was a Muslim? I think it was in 1990. How old were you? That time I was 11. Because you saw a huge crowd coming. The Gau Kadal was, in fact, what lit the insurgency. And I could see that security force also lining up because they were not expecting such a huge crowd coming towards their side. And suddenly the firing started. And you could see this people falling. A rumor was spread among the crowd that it was the Pandits who were responsible for this. And suddenly after 10 minutes,
you are listening to the voice from every mosque. It was like हम क्या चाहते हैं आज़ादी, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, and ज़ालिमों है काफिरों कश्मीर हमारा छोड़ दो, was for armed like security forces. Because your mosques daily are blaring that you either support us or you leave this valley. You are traitors. All the mosques were blaring that. That's the first step where I think our community felt that Kashmiri Muslims didn't support us. They felt that for hundreds and thousands of years we have lived together, and this one moment could not have happened if it is not known to everyone at the same time. You know that at 10, everywhere in Kashmir Valley, in every mosque, the same thing is happening. My grandfather was basically Mr. H.N. Vanchu. He was a trade unionist. And throughout his life, he was just helping for sweepers and downtrodden. Because the three guys who came, they told him that the sweepers' two sons have been taken by army. They have been tortured and the parents are in a very bad shape. They have fainted. He just left. And then he was shot in Bal Garden by those three people. That was one of the most painful moments of my life, wherein, you know, that it was something, he was a light to me, and suddenly the light goes off your life, it's darkness. The year 1990 saw several brutal killings of Kashmiri Pandits by militants across the valley. Muslim Kashmiris expressed shock and loss while recalling the sudden and silent evaporation of their Hindu brethren from local neighborhoods. Seats occupied by Hindu schoolboys and girls were empty one morning, and this is all the indication they left of an exile that continues till today. Buses and trucks collected Hindu families from villages and towns. The community was taken to a refugee camp in Srinagar, and from there shunted out of the valley. Could they have stayed on? Was it necessary for them to have left? No, I don't think it was necessary for them to have left. But they were in a panic, as I said. They were frightened. They were terrified. And they saw no protection. Because as I said, the administration had virtually broken down. So who was there to protect them? We just openly said that we're not going to leave. Those who killed him, if they feel that we'll leave, will not leave. We'll see to it that they are hanged. Like, even for a moment, I had turned communal. I had turned like, that you start getting charged as if he was killed by Muslims. But then I think it was nice that I stayed back and started seeing things. And then in this 2 years span I learned a lot, because lots of my friends who were with me, they were Muslims who were consoling me all along. That state is one state which through turbulent times, terrible times, even under persecuting and fanatical rulers, still retained among its people a sense of brotherhood. If you like, you can call it Kashmiriyat, but certainly secularism. But the Kashmiri Pandits and the Kashmiri Muslims remained together, unified. In that state, you have a mass exodus of that very community under a secular, democratic republic. Now surely, this gives one, and I certainly carry, a sense of shame.
ایسا کوئی کیس ہے جس کا بچہ واپس مل گیا ان کو؟ نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں آ گیا. پورے کشمیر میں ایسا نہیں، کوئی نہیں آ گیا. 19 سال ہو گیا میں نے کوئی نہیں دیکھا. کوئی نہیں آ گیا آج تک. میں نے ہر جیل ڈھونڈا، کوئی بچہ نہیں واپس آ گیا. How many missing people are there in Kashmir today? I would say it's about 8,000. What is the difference between a missing person and a disappeared person? Missing is someone who is missing anywhere, may have gone to Pakistan for arms training, may have gone to Bombay to become an actor. This is missing for government. It's a government terminology. We use the terminology wherein we say that these people are enforced disappearances. These people have been forcibly disappeared in custody. They were arrested and later disappeared in the custody. The think tanks in New Delhi, do they have an exposure to these things that are happening here in Kashmir? I don't think that they don't Where do know. where do they get their information from? Oh, from the intelligence bureau, where else? And from the army. I don't think that they don't know. They definitely know everything that's happening. They don't think these violations are improper. For them, it's not the perspective of human rights that they deal with. They look at everything from the prism of national security. And whatever this term national security means, because it doesn't provide any security either to the people of Kashmir or to the people of India, they seem to think that this is part of the way national security is maintained. So this is of no consequence to them. Picking up 8-year-old boys and 13-year-old boys and putting them into torture chambers. I think any national security person in Delhi would call it the absolutely pathetic phrase that has been coined called collateral damage. آپ ان میں سے کسی لوگ کو پہچانتے ہیں کہ یہ مطلب کسی کے ذہن سے ہے یہ؟ کون پینڈنگ ہے؟ ادھر میرا بیٹا بھی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا ہسبینڈ ہے، کسی کا بھائی ہے، یہ بہت سب لوگ ہیں. اس میں سے سب سے چھوٹا کون ہے؟ یہ 8 سال کا ہے جاوید احمد ڈار. یہ اٹھایا ادھر زیرو برج میں اٹھایا. CRP جپ سے آ گئے اسکول میں کھیلنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا. میرے کو آج تک 13 سال ہو گئے. میرا یہ چھوٹا بھائی ہے، 3 بھائی ہیں. ہم 3 بھائی ہیں. ایک کا نام الطاف حسین ہے، میرا نام پرویز احمد ہے، اس کا نام ریاض احمد ہے. میں نوکری کر رہا ہوں. اس
इसका नाम रियाज अहमद है सर। ये मैं बांडीपुरा का रहने वाला हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी बच्ची ये थी, मैं घर पर नहीं। 2-4 आदमी आए थे तो उनके पास गन थे, तो उन्होंने पूछा इससे कि हमें रास्ता मालूम नहीं है, हमें दरिया से ले जाइए। हमने तो बहुत कोशिश की थी, मेरी नानी ने भी की थी, मगर वो माने नहीं। इन्होंने बोला फिर मैं आऊँगा तो मैं इनको जगह दिखाऊँगा। फिर तब से आज तक ये नहीं आए। सुबह 3 बजे आ गया कोई पड़ोसी, तो उसने खटखटाया दरवाजा, बोलता ये उसको जब उसने दरवाजा खटखटाया आपको क्या लगा? बोलता उसको मत कुछ बोलो, मेरे को, उसकी डैडी को बोला। उसकी क्या उम्र थी उस टाइम? 16 साल का होगा, 16-17 साल का हुआ था, ज्यादा नहीं था, बहुत कम ही थी, 6 क्लास पढ़ा था ये। मैंने सब कपड़े फाड़ा, मैं सड़क पर सोया 3-4 दिन, मैंने धरना दिया मेन रोड पर अड्डे में, सारा कपड़ा। उसी वक्त मैंने FIR भी लॉन्च की। FIR मेरा दर्ज हुआ ही नहीं कहीं, बोला वो लापता है, इधर ही होगा कहीं से, टाइम बाय होगा, कहीं आ जाएगा 1-2 महीने के बाद। हर एक आदमी को पता था, कोई उसको उठा कर लेता, कोई इसको उठा कर लेता है, इस वजह से मेरा FIR दर्ज नहीं हो पाया। And the government is totally callous because all they are saying is just tell us where they are. If you think that they are militants, okay, deal with them the way you want to, but at least let us know. There is what bothers them the most is that they don't know anything. एक मामूली एसपी ने वहां से रिपोर्ट भेजा है कि इसका भाई LC क्रॉस है। अगर वो LC क्रॉस है तो किस LC में है, किसके पास है वो, किस पाकिस्तान में है, किस देश में है वो, क्या पता वो मर ही चुका है। मैं ऐसे ही यहाँ फजूल बकवास कर रहा हूँ। मैं अनपढ़ औरत हूँ, मैंने ये सीखा इसी मुसीबत के साथ। सब बाजार वाजार देखा, लाल चौक भी देखा, मैं बाहर ही नहीं निकलता। मैंने सब देखा, इसीलिए सब देखा, इसी मुसीबत। बेटे को गुम बाहर भी मैं इसीलिए गया। मैंने बहुत सीखा मुसीबत के लिए। मेरे पहले घर से बाहर नहीं निकलता। आज 19 साल हो गए, कोई जगह मैंने नहीं छोड़ा। मेरठ भी गया, तिहाड़ भी गया, जोधपुर, कोई बनारस भी, कुठवा भी, हीरानगर भी, कोई भी जेल में नहीं, हर जेल में नहीं ढूंढा, किसी नहीं मिला। ऐसी माँ बहुत है। It was 940 to 1000 unidentified bodies found in 18 graveyards. These bodies were not of the militants, they were of the civilians, claimed to be as foreign militants, but later on they were found to be locals after they were exhumed. They have been killing non-combatants, civilians, after arrest, making them disappear. How many bodies have been put in the Dal Lake? If you see this beautiful lake here, since 1990, how many bodies have been dumped there? This Dal Lake has 4 interrogation centers. The infamous interrogation center was here, the Papatu, where the people were tortured, they were brutally killed. और आपका बेटा कहाँ है? आपका मेरा बेटा यही है। फिर बाद में थक गया ना, फिर मेरा फाइल गया सैंक्शन के लिए 97 से होम मिनिस्टर के पास। उन्होंने फाइल लिखाया, आज तक वो पेंडिंग केस। फिर मैंने ये दूसरा रास्ता पकड़ लिया। मैंने बोला हम इकट्ठे लड़ेगा, इकट्ठे हम सब इकट्ठे हो जाएगा तो फिर मजबूत हो जाएगा। आपने जब ये शुरू किया APDP, आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिला? कभी तंग करता, बोलता आपने घर खराब किया, बच्चे खराब किया, उसके पीछे पड़ गई। मैंने बोला तू बैठो, तू अपना काम करो, मैं खुद ये काम करूंगा, तू जाओ अपना काम करो। In J&K, it's not like Punjab, it's not like a plain territory. The nature is very much in favor of the perpetrators. A lot of streams are here, a lot of forests are here. The modus operandi is very interesting. Somebody from south
He is killed and then buried in the north. Somebody from the north is taken to south and killed there. Who transports these bodies? Army, police. We're not talking about one or two, we're talking about thousands. This is big logistics involved. It is a pattern, it's a pattern here. The state owns an explanation. Whose these graves are? If state is not doing anything, or the state institutions have failed, finally international institutions have to do something which you are not doing. In the cozy living rooms of middle-class India, news from Kashmir plays as a self-righteous battle between armed forces and militants. But contrary to perceptions back home, the Kashmiri militant is not part of a single homogenized group. Differing motivations and ideologies are at play, at times working against each other. In the fading light of day, I was taken to this football field in a village in Kashmir for my first meeting with a Kashmiri militant. मैं यहाँ से निकला जब मैंने ऐसे सुना था कि बोटू एक जगह है वहाँ पे मतलब मिलिटेंट्स होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं छोटा भी था, दाढ़ी भी नहीं आई थी, बिल्कुल छोटा था उस दिन। क्या उम्र थी आपकी? मेरी उस वक्त थी 20 साल। तो उधर मुझे मिले लश्कर के 10-12 आदमी थे वहाँ पे। मैंने उनको कहा कि मुझे जहाद करना है, तो उन्होंने मुझे कहा आपको मालूम है जहाद क्या है? मैंने कहा जी जहाद है अल्लाह की राह में लड़ना है, कि यहाँ पे मतलब अल्लाह का कानून लागू करना है, कुरान का कानून लागू करना है। उन्होंने कहा पहले आप अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से पढ़ लो कि क्या है जहाद का, क्या कंसेप्ट है, आपको लगता है कि यहाँ पे जहाद है कि नहीं है। तो आप छोटी भी होगी, आप जाओ वापस, पहले खुद देखो आप। डेढ़ साल के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया। 1.5 साल के बाद? 1.5 साल। आपको 1.5 साल लगे आपको सारे पूरे कुरान पढ़ने में, समझने में? जी बहुत। मेरा जो मकसद था यहाँ पे मुझे रखा गया था जो सिक्योरिटी फोर्स के साथ सोर्सेज होते हैं तो एलिमिनेट दें। यस। तो इस एलिमिनेशन के तरफ आपने क्या किया? वो तो बताना ठीक नहीं। क्या नहीं किया वो तो अलग मसला। अपने हिसाब से आप सक्सेसफुल रहे हो, आप कामयाब रहे हो? कामयाब तो नहीं रहा। नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो मैंने किया उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आगे बढ़कर क्या करना चाहते हैं आप इसके बाद? ऐसे मेरी फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, मतलब टार्चर जो किया है राष्ट्रीय राइफल्स ने किया है या एसओजी ने किया है, हार नहीं मानी है, थक नहीं गया हूँ, लेकिन पता है कि मेरे से उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसी काज को मैं चलाना चाहता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल इसी काज यही है। क्या मतलब आप इलेक्शन में खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव कहाँ लड़ेंगे? अगर चुनाव लड़ेंगे तो माने क्या पॉलिटिकली होता है, मतलब यही मान लो आप, मैंने जमात इस्लामी ज्वाइन किया मिसाल, उनका ही कंसेप्ट है इस्लामिक कंसेप्ट है, इस्लामिक स्टेट। आपकी तो ड्रीम यह है कि लोग मतलब लोगों को आप कहेंगे प्रोवोक करना था, लेकिन मैं नहीं माना प्रोवोक करना था। उनको बताएंगे कि मसला क्या है, मतलब जो नए लड़के होंगे उनको भेजना, उनको सिखाएंगे। नहीं जाएंगे तो खुद भेजेंगे, नहीं जाएंगे तो खुद वो, लेकिन पर उनको रास्ता उनको एक कंसेप्ट देंगे कि है क्या जिहाद है, कि अल्लाह की राह में लड़ना, ताकि जो ये पूरी जो कायनात मतलब यहाँ वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड में, कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारा मकसद है कि कश्मीर में अगर इस्लामिक स्टेट कश्मीर को बनाएंगे, उसके बाद आगे ही जाएंगे तो फिर इंडिया पर। तो इसके लिए दो चीज़ें, अगर हो गया तो ठीक, हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो गया तो उसमें मतलब मारे जाएंगे, है ना, तो उसमें भी मिलेगा हमें रिवार्ड।
वहाँ पे ये कंसेप्ट है कि रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या है? पैराडाइज। पैराडाइज में क्या होता है? वो तो पता नहीं। मुक्ति, सॉल्वेशन। Lulab Valley is the end of the road. Pakistan is only a few hours by foot over the mountains. A major route for infiltration, explains Zangli garrison, the only way in and out. The gates close at sundown, and several villages in this valley are literally locked down till dawn. The locals depend on the armed forces for the basic business of day-to-day life. As we were filming, this jovial man came over, having seen us pass by his home about 2 kilometers away. Assalamu alaikum. तब तक मेहमान का शक्ल से दिल्ली ने हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। हमारे गांधरबल में सैयद मसूदी गांधरबली चाचा हमारे, वो पहले मिनिस्टर थे। उनको जब मिलिटेंट ने गोली मारी तो मैं उस वक्त वहाँ था मौके पर, मैं गाड़ी चलाता था। तो मैंने सोचा मिलिटेंसी कौन सी चीज़ है, चाचे मेरे को मारा गया, क्यों मारा गया, ये तो कुछ बैक होगी इसकी। Back in Srinagar, the largest city in Kashmir, Khemlata Wakhlu and Dr. Om Karnath Wakhlu, prominent Kashmiri Pandits, were abducted by militants in the early 90s. While the rest of their community were fleeing the Kashmir Valley, they saw a very different side of militancy. 4 September 91 तो दोनों को इसी गार्डन से उठा के ले गए थे, यहीं पे जहाँ हम बैठे हैं। वजह तो ये थी कि मैं मिनिस्टर थी प्रीवियस रिजीम में, तो वो एंड देन सॉफ्ट टारगेट। उन्होंने बताया कि ये वजह है? नहीं, वो क्या कहते हैं, आई थिंक दैट वाज मस्ट हैव बताया। नहीं, उन्होंने वजह ये थी ना, उनके 12 आदमियों को छुड़ाना था। और बंदूक लाने के बावजूद भी बाप को भी मारा गया, भाई को भी मारा गया। तो फिर मैं मजबूर हुआ उस वक्त, मैंने कहा अब इसके अंदर कुछ नहीं है, बेहतर है कि मैं इसको तर्क करता हूँ। मिलिटेंसी इन इलाकों में ज़्यादा हुई, इसलिए हुई कि इन इलाकों में जितने भी वहाँ से आता है हर किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन किसी को उसका फ़ायदा नहीं मिला है। यहाँ भी गान पीछे भी गान, 5-6 आदमी। मेरे स्पेक्स गिर गए, कहीं चप्पल निकल गया पैरों से, तो बाहर ले गए स्कूटर्स में, 3 व्हीलर्स में। I was hating the militants. To be frank, I'm sorry to say that. At that moment, it was like that. I was hating them core of my heart, from my core. मिलिटेंसी के दौरान सर हमें इतना था, भाग रहे थे सब, भागो जी, जब मिलिटेंट बन जाओगे वहाँ से पैसा मिल जाएगा, बंदूक मिल जाएगी, तो सब हो जाएगा। ना वहाँ से पैसा मिला ना कुछ मिला, बंदूक तो मिल गई सबको सर। आपको मिली बंदूक? जी। कौन सी बंदूक चलाई आपने? कलाशनिकोव सर। कलाशनिकोव? जी। तो उसकी पूरी ट्रेनिंग कहाँ से मिली आपको? ट्रेनिंग तो वहाँ पाकिस्तान में दे रहे थे, जहाँ से जाते थे वहाँ देते ट्रेनिंग। हाथ में बंदूक दी, फायर 2 करवाए, निकल जाओगे बस। जी। तो मैं पाकिस्तान जब सर गया तो उस वक्त ग्रुप वाइज 200, 300 जा रहे थे, 200-300 लड़के जा रहे थे। कोई बॉर्डर उस वक्त पाबंदी नहीं। Actually, we used to go from village to village because we were not staying in one place. कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं। बच्चों को खींच, कई हाइड आउट्स में बच्चों को सोते सोते निकाल के बाहर, माएँ उनकी ले जाती थी दूसरे कमरों में, तीसरे, रोते रोते। I used to feel bad, really bad. We will tell these people to bring their children. We are going to teach them as long as we are going to stay there. I just say, come on, get your school books, mathematics, Urdu, whatever. And then ask them questions from that very thing, whatever they had done and all that. स्कूल भी यहाँ से हमें 13 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। स्कूल के लिए हमें, मैं कह रहा था कि इतनी बेरोजगारी थी, 17 रुपये दिन की मजदूरी मिलती थी।
17 रुपए का हम अखराजात आगे वाले 7 दिनों में करते थे, पेंसिल कापी, लेकिन हमें जूते के लिए नहीं मिलता था। हमारे जो माँ बाप थे उनके पास उतनी मजदूरी थी जितना परिवार का खाना वो हासिल कर लेते थे। Early morning, woke up with the azan. It was Allah, something like that, which soothed my nerves. And I was weeping with that azan. I wept bitterly. Even now I feel like weeping. First my bed, then his bed, then all the militants, their beds were around our beds. In the same room. So first time I saw their faces, so supple, so innocent faces, with beards of course, with horrible these weapons under their pillows. And I said, oh, my God, are these the militants? They are so innocent people, young people. One of the boys was Javed, youngest boy. I snatched a cigarette from his mouth and slapped him. I said, do you think Your mother is not here, your parents aren't here, therefore you will behave the way you are behaving? And that changed the whole scenario. That day onwards, till we were freed, they used to ask us, Madam Ji, Auntie, my name also, Dr. Saab, he was called Dr. Saab. They gave us very big family size toothpaste. I was taken, I said, God, that means it's a long journey. जब हमें पकड़ा गया, क्यों हमारे पर लाठियां बरस रही थी और उस वक्त गनों के बट बढ़ रही थी। सामान हमारा साइड में था, आर्मी। मतलब जगते ही आपको एक लाठी लगी? जगते ही हमें सर पहले गन, उनके पास गन थे, वो साइड गनों का साइड अपने हाथ में था, पीछे वाला साइड हम पर बरसा था। क्या क्रैकडाउन? जी नहीं, छापे के दौरान अचानक वहां जा रही थी, मकान को छापा डाला, हम सोए हुए थे रात के 4 बजे का। Early morning at about 4 o'clock, one lady comes, she knocks the door. She says, हम मर गए, मुझे नीरे वाले जल army has cordoned off. Say 4:35 in the morning till 9 o'clock we were trying to escape. They said they will. What do we will have no alternative. Right. We will have no alternative but we have to fight. Fight. They had LMGs. Two LMGs and then 16 Kalashnikovs and all sorts of grenades. I could guess they could fight easily for 5 to 6 hours with whatever ammunition they had. Easily, they could. I opened my like this. I said, first bullet. Then only you can do anything. And then you are free to do anything. As soon as I uttered this word, he put his head here on my lap and wept like a baby. He was not a baby. He was a quite elderly person. He wept like a child. And he said, I have got cancer. We are khatam ho gaye hai. Usas mood, usas gayi khatam, usas Kashmiri. These shall we were here. They used pheran on the pegs. Gamik pheran is panche. I said, you wear those and put your guns and everything here. I said, you go with these people, the villagers. Meanwhile, people had been collected near the mosque. They were army people were just shouting. For cordoning, they take out all the males into the compound and ask them to collect there till they would go on the houses finding for military. And we came out of the house and took out our hands up so that they wouldn't shoot us first, because army was very close. Then they took photographs, they saw him, me, everything. They were searching for us. It was and they were very, they were jubilant. Then they were saying, where are these militants? We told the army that they had been disarmed by us and the arms are lying in that ravine. We told them that arms are there, you can search it. But they have already gone. We told them that they are already gone, which they were there very much. They did, of course. They did. तो हमारे साथ सिविल भी 2-3 पकड़े सर वक्त। हाँ, पीछे हमारे साथ सिविल भी सर 2-3 पकड़े गए। हाँ, चुप
तो सिविल 2-3 दिन सर पकड़े गए हमारे सर उस वक्त सर। फिर उनकी गिरफ्तारी की हमारी के बाद 2-3 दिन के बाद हमने उनको छुड़वाया, हमने कहा कि ये बेगुनाह है। Have you met them after that? Oh yes, some What of was it them. like, that meeting? They were just like normal human beings. They know our credentials, how we saved them at that time. Otherwise, it would have been a massacre. He's saying that please take all the pics. Take all the pictures. Yeah, he's saying that what they've kept in the road and take the pics of those. Look at this guy. He's saying that. What is this? What is this kiss? Strikes, hartals and curfews are the norm in Kashmir. And in this remote little village, children were enforcing their own version of a curfew. Keep them inside their homes. But अच्छा देखो अब बुला रहे हैं हमको वापस, देखो ये देखो. But these kids seemed a little indecisive about who the curfew applied to and why they were protesting at all. Now the story ends. This gentleman is refusing to move his car, so we have to go around. And ये इन्होंने अपना the line of control has opened. The line of control is opened. Yeah. We are moving on. Here is angry young man. Come up. आ जाओ यार. Okay. Storm in a teacup. Storm. Oh, there's another barricade over there. Fantastic. There's another one. Yeah, we have to go through that also. Come on, come on. मिलिटेंट लोग भी यहाँ पे आके आपको तंग करते थे? छोटा पाकिस्तान इसको बोलते थे। छोटा पाकिस्तान। सभी मिलिटेंट छोटा पाकिस्तान। इसमें कोई वैसे करीबन 500-600 मार गए सभी इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आपने उनको रोका नहीं? कौन रुका सकता है? कौन रुका था? उस टाइम ऐसा साफ था, जबरदस्ती पकड़ के ले चलते थे, अगर जो नहीं चलता था उसको मारते थे। वो जिस टाइम इनके रात को लगे उठा के, रात को सोया था बच्चों में बिस्तरे में उठा के लेके या जान दे या चल साथ, हमें पता ही नहीं चला, हमें नहीं पता चला, हम सोए थे, हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद मिले आप उनको? पीछे आए जैसे वो तो घर पहुंचे नहीं, रास्ते में वो मारेंगे। और सब मारे गए या अभी लापता है? नहीं मारे गए सर, लापता थोड़े, लगभग 4-5 केस होंगे ऐसे जो लापता। किसने मारे? दूसरे मिलिटेंट ने मारे कि आर्मी ने मारे? आर्मी ने भी, उन्होंने भी खुद भी मारे, अब उसमें भी मार गया। यहाँ थी रेड चलती थी HM और अलबर की, उसमें भी बहुत लोग मारे। देखिए हिज़्बुल मुजाहिदीन तो ज़्यादा अपने इस्लामिस्ट कहते थे अपने आप को, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो लड़के थे भी उसमें जो बड़े दीनदार थे। अंदर ही अंदर मेरे डिफरेंसेस उनके साथ हो रही थी कि कई जगहों पे ऐसे ये ज़्यादा मतलब सॉलिड बन रहे हैं, जहाँ फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी वहाँ ये फ्लैक्सिबल नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ बैठ के करेंगे। हाँ हाँ ये देखो ऐसा मतलब है। ये चीजें बहुत यहाँ पे मतलब समझी जाती है, नहीं ठीक नहीं। क्या अफेक्शन दिखाना दूसरे के सामने ठीक नहीं। जब आपको ये डाउट्स होने लगी उसी टाइम निकल लेते तो कहाँ जाते? उनसे अच्छा भी तो नहीं ना था मेरे नज़र में कोई कि जिसके पास जाऊं, जिसकी छत्र छाया में बैठूं। अब निकल के सरेंडर करना था जो मुझे अच्छा नहीं लगता।
सरेंडर करके आर्मी वाले कहते हैं आजा हमारे कैंप में, इधर हमारा काम करो। ये आम था उस टाइम? जिससे ये आम था उस टाइम, मतलब जबरदस्ती करते थे? जबरदस्ती, या तो इतना सोर्सेज होनी चाहिए थे कि इधर एक हाथ सरेंडर किया, दूसरे हाथ अब्रॉड चला गया। If you have terrorist militants who are paid by you in order to harass the government can also do the same. हाँ, फॉल्स एनकाउंटर में इन्हीं को फिर मार देते थे ना बाद में, जब जरूरत पड़ा कि हमने फलानी जगह पे एनकाउंटर किया था, वहाँ 4 लश्कर के लड़कों को मारा है, तो वो लड़के कहाँ वो लोकल ही होते थे ना, वही लड़के जो इनके पास काम करते थे। अक्सर काम उनका खत्म हो जाता था, उनको मार देते थे इसी फॉल्स एनकाउंटर में। It is not legal, it is illegal. And in fact, the Supreme Court has come down very strongly on the Chhattisgarh government for having had the Selva Juram. I myself have never subscribed to that, but that is what the origin is. I would say that it is not justified under any circumstances. ऑप्शन ही नहीं था दूसरा, सरेंडर कर देता तो तब भी मरना था। उधर तो फिर भी मौत अच्छी थी, इज्जत की मौत थी, इधर तो जिल्लत की मौत थी। सोसाइटी उसे आन ही नहीं करते हैं जिसने सरेंडर किया है। सोसाइटी में उनको मकबरों में दफन नहीं होने दिया जिसने सरेंडर करके फिर अगर मारा गया है कहीं, अरे गद्दार है, इसको दफन मत कर दो। अब देखो आजकल अगर वो उसके बच्चे होंगे, उन पे क्या बीत रही होंगी। नहीं, हम ही छुपा के रखते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई फोटोग्राफ, उन दिनों मतलब होती थी कि फोटोग्राफ नहीं लगना चाहिए इनके हाथ। देखिए मेरा कोई ग्रुप फोटो है, अब मुझे वो पकड़ लेती तो मुझे वो दूसरे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये कौन है, कहाँ है, अब तो वो परेशानी हो जाती, तो ये छुपा के रखते थे। एक हिस्ट्री सी गायब हो गई ना, एक हिस्ट्री सी पूरा, मतलब शादी का वो जो सीडी बनी थी। Therefore, towards the end, it had become virtually a proxy war, where people who only the locals who were participating in it were participating in it largely for money. But even if they were participating in it for money, you might ask the question that had they no feeling for India, that they would actually join in a war against India? Yes, they had no feeling. आप लोगों ने सपोर्ट की मिलिटेंट को उस टाइम पे? सपोर्ट किया आप लोगों ने? मुसलमान थे, क्यों नहीं करते सपोर्ट? घर के भी थे, बाहर के भी थे, मिलिटेंट थे। क्योंकि जनाब अली हमें और यहाँ पे भी उनको छुपाते थे घरों में? मुसलमान थे, नहीं छुपाते। But the army Jawan tended to feel that the people were the enemy, because it was the people who had actually taken up arms, and therefore the attitudes towards the public were those of an opponent or an enemy, and a growing feeling among the people that the army is being used against us. कि अगर मिलिटेंट आते थे वो कहते थे पकड़ रखते थे गन का, अभी टास मारेंगे, देखो खाना तो देते थे उनको भी। अगर फौज आती थी दले अभी गोली मारेंगे, तो उनको भी चाहिए देते थे, सीधी बात। इसमें जान का खौफ, जान अजीज चीज है, जान के लिए कुछ भी करना। Because the feeling was that these are all people who are Pakistanis, and the army has fought several wars against Pakistan, and so to many of them it appears that this was just another of that lot. As one face blurred into the other, story after story of horror, my opinions of Kashmiri militancy, the institution that is the Indian Army, and our nation's claim on Kashmir was coming apart. I came to realize that the real story of Kashmir lies in her villages, and the people who have suffered the most are also its most vulnerable, the women and their children. In the winter of 1991, first there were rumors, then a report was actually received that there had been a mass rape in Kunanposh Buraj. I said that I would go, as Commissioner of Kashmir, I would go and inquire into the matter personally. So I proceeded along with a group of people in which there were Army, BSF and other representatives.
मिलिटेंट निम आए मिलिट्री आए ये पूरी की निम याद आए जब मोन खानदार वोत द्रानस कमरस मज कर मिलिट्री मन सिद था नीख कड़ित नबर वलिक बोन आ इंटरगेशन तम सात चलान केतनस नीत कुछ पे रात के 12 बजे यहाँ से चीख पुकार यहाँ से चीख पुकार अस गई जबरदस्ती गोड़ त्रेश मंगनी गोड़ा क्या थम दमो थप गोड़ा क्या थम लगभग तुम 5-6 नफर त्रे लड़की में जूम तो बेस बो कि लयम ये थम्बो ये बच्ची थम्बो तो यमन सतन जुंगुम सही सही तम तकरीबन 4 खसान तम वसान बोन पे खसान बे 4 वार तम खसान. And they said that the men were all drunk and that the women were raped repeatedly by these men. तकरीबन 10 लड़ रात के तक जेह पड़ गसान आतिमा रोड तेमा दिसना आस्था तेमा रोड दिसना आस्था मगर मुन में तो वक्त में लागो नेबर आता गुदे से दुइस पोर एजुकेशन में लोग मत सुबहन कहन बजन ता कह 12 बजे उठ सुबह क्रियाड वक्त इस त्रोख याल गई आर्मी सब औरतें रो रहे थे किसी के कपड़े फाड़े हुए थे किसी से खून बह रहा था ओडनी चोब दे तूफान फिर लड़की आस आज ये मार लोस लड़कियन पे मत. In the conclusion, I had said that it is what the mystery is. Why should there have been such a report in the first place? Because the reports that had come in from the army earlier was that the villagers had been very, very cooperative. जब हमने देखा 10-15 जगह ऐसा हालात देखे हम सीधे हमने गाँव को बुलाया चलो हम ब्रिगेड सब को पत करकम आर्मी गसित आ योर 2-4 दे आय निब्रिम पत ब्या अफसर आ कुछ मिलिट्री होंदे थोद अफसर आए सारे जनान वनान कुरुख तस निश दुक बयान शयान बात मत आई और फिर उन लड़कियों से डॉक्टरी हुई उसकी सर्टिफिकेट थाने में है Why were the men all sent out and the women left there and the soldiers then entering people's homes when the men were not there? This could have been offensive to a Muslim community anywhere. आज मसाय पत बयानस में मसाय आज ये मसाय लड़की ममून बयानस में आज ये पट विकनस माना क्या ये विकनस टिशन माना क्या ये नेबर जम ज्यादा ममून बयान दो. But the main recommendation in that report was that there should be a more detailed inquiry as to what happened. And during that time, there was an attack on me, an effort to shoot me in which the DSP, Mr. Scholl, was killed, and another woman who was shopping was also killed. This was a direct result of my report on Kunan Poshpura. And the fact, not the report on Kunan Poshpura, that report was published. But the point where I had said that there is suspicion of rape and it should therefore be further inquired into was cut out of that report. Tiथे pad karan ka to aise tam inse tambru तो सलूशन ते मुगना आवे दे हन युत ते मसीन जन से मसश कानन मजबारा न छप करी काथे मवंस सदोर to aise chatam to aise tiथे pad karan bolos انا زعرف مش بدا ظلم قدام سنه. हाँ इधर 5 मकान जलाया. किधर? इधर ये समंदर में. दिखाइए. ये वो 5 मकान है. क्यों जलाया? इसमें मेंटेन थे 2 मेंटेन थे. क्या अफगानी थे वो क्या थे? वो हाँ जी अफगानी था वो पाकिस्तान का है. अफगानी या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी
उनको ब्लैक ड्रेस लगाया था, निकाब, और दाढ़ी इतनी बड़ी लंबी थी। हम उनसे देखकर ही डर लगता है। आप हमें यहाँ ठहरने क्यों नहीं देते हो? हमने उनसे सीधा ही पूछा कि यहाँ फौज आ रहे, रोज फौज जाता भी है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने हमें पकड़ा, नीचे फेंका और बंदूक उठाया, फिर हमें उन्हें मारा। सुबह जब वो टाइम आ गया 9 बजे हो गया 11 और आ गया फौज मकान के अंदर आए और तलाशी वलाशी ले ली। हाँ, तो मिलिटेंट कहाँ थे इस टाइम पे? वो ऊपर थे, वो तो कमरे में 2 मिलिटेंट मारे गए थे और 2 फौजी भी मारे गए थे उन्होंने। तो फिर उनका एक फौजी मर गया तो मकान जलाया। उनके गुस्से में उन्होंने 4-5 मकान जलाया। गुस्से में? हाँ, गुस्से में। मतलब मिलिटेंट को मारने के बाद? हाँ, मिलिटेंट के मारने के बाद। कौन सी फौज? बीएसएफ में? आर्मी थे। कौन सा? 14 RR। तो ऐसे होता है कि गुस्से से जला देते हैं? हाँ, जब उनका डिवीजन हो गया तो जलाया। कैसे जलाया? फायरिंग से कि केरोसिन लगा? गन पाउडर लगाया, मतलब उड़ा दिया उसको? सब कुछ कपड़ा नहीं निकल गया, ये पैरों से जूता भी नहीं निकल गया। फौज ने आपको निकालने नहीं दिया सामान? कुछ भी नहीं, जिस वक्त 11 गया फिर कुछ भी नहीं। जिस साल उस वक्त मुझे दुकान थे, सिलाई का दुकान थे, मुझे बहुत सारे लोगों का मतलब ये है ना वहाँ कपड़े और मशीन भी है मेरे पास, तो वो सब जल गए, वो मेरे कपड़े, वो मशीन भी सब कुछ। और क्या बोला, क्यों जला रहे? क्या आपने मेंटेन घर में रखे? उसके बाद जब मकान भी जला दिया, उसके बाद लगभग 7 दिन के बाद आए मिलिटेंट हमारे घर। फिर आए? हाँ, फिर आए तो उधर आगे बोला कि फलां बशीर अहमद कहाँ है। सब मारा। हमारा 3 हड्डी तोड़ गया, 3 हड्डी। एक तब यहाँ मारा बंदूक। हम बोलते थे मैं इसको नहीं बाहर छोड़ दूँ, ये भी बोला उन तो मार के छुड़वाया? मार फिर कुछ पता नहीं चला, बेहोश गया मार बस, फिर उसको छेड़ के लिया है। तो हम रोज जंगल जाते, 7 दिनों में रोज जंगल जाते उसको ढूंढने के लिए। बाद में 7 दिन के बाद मार के छोड़ दिए थे, उसकी लाश छोड़ दी। ये मकान शकान गाँव वालों ने ही बनाया है। गाँव वालों ने बनाया उसी टाइम। कपड़े भी दिया, लकड़ी भी दिया, चावल भी दिया, ईंट भी दिया, जो कुछ लग गए ना बच्चों को गाँव वालों ने दिया। जिस वक्त ये मकान पूरा किया, छत कुछ भी नहीं आता, पड़ गया बर्फ। फिर गांव वालों ने मदद किया, इसके लिए टीन लाया। बर्फ के टाइम पे था ये? हाँ, मतलब सर्दी के टाइम पे? नवंबर। करी कुस बुलबुल आजाद वनन मजत्रा जीरोबम, करी कुस बुलबुल आजाद वनन मंत्रा जीरोबम, पनने खून पनने नौबहार शान पैदा कर, वलोहा बागवानो नौबहार शान पैदा। अब क्या ख्वाब है कि आप क्या करना चाहते हो उसके बाद? बस ऐसे ही, मेरी 5-6 बहनें अभी जिनकी शादी अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी मेरी उम्र भी क्या, छोटा हूँ अभी। अब जो पहले पढ़ाई करेंगे उसके बाद अगर हमें कुछ मिले रोजगार सोच। किसी भी बहन की शादी नहीं हुई अभी तक? 2 बहन की हुई है, अभी 5 बाकी है। इसका मम्मी से में कुछ भी नहीं, मम्मी पहले ही मुयास। तो जब इनकी शादी होगी तो फिर कौन फैसला करेगा? आप लोग करेंगे फैसला? हम लोग करेंगे। ये सबसे बड़ी डैडी कब आएंगे तो वो करेंगे, या मम्मी कब आएंगे। Military and paradise, bulletproof jackets and the veil, breathtaking vistas of mountains and crystal clear lakes, projected like cinematic illusion through barbed wire, darkened army bunkers and alert eyes of battle-ready soldiers watch not an enemy or a border, but school children, women shopping, delivery men delivering goods. Behind the illusion of daily ritual, there is the promise of yet another militant attack. Blood, limbs, followed by reprisals. Such is the state of normalcy into which children are born and raised. A cycle institutionalized and ingrained in the psyche of the Kashmiri. मैं बॉलर था ना, मैं फास्ट बॉलर था। क्या स्पीड थी आपकी बॉलिंग की? पता नहीं, वो नहीं बता सकते, यहाँ पर इंटरनेशनल है।
तो काफी विकेट लिए आपने? हाँ विकेट तो मैं लेता था। विकेट तोड़े? ना टूटा नहीं? ना, तोड़ने की कोशिश करता था मगर टूटा नहीं। उन्नीस सौ 95 में मेरा बहन डेथ हुआ फायरिंग वजह से। क्रॉस फायर में? क्रॉस फायरिंग में। ये दूसरा वाक़ा है हमारे के लिए। कहाँ था जुलूस? यहाँ से। यहाँ पे? हाँ। तो आप जुलूस के पीछे में जा रहे थे? हाँ मैं जुलूस के साइड में जा रहा था। अच्छा। फिर मुझे यहाँ पर आ गया, यहाँ से वहाँ से। वो उसमें बैठा है, वहाँ पर थे वो जहाँ बंकर में बैठे? हाँ, वहाँ उन्होंने 1 टन लाई, गाड़ी में फोर्स लाया, फिर वहाँ पर बिछाया। इसके पहले गोली चल रही थी जब? पहले भी गोली चल रही थी, फिर आगे से फिर मुझे भी लगा। आप यहाँ गिर गए? हाँ मैं यहाँ गया। फिर यहाँ से क्या हुआ? फिर बाइक पे उठाया। बाइक पे उठाया? हाँ 2 लड़कियों ने, फिर मुझे ले जाने की कोशिश की और वहाँ पर उन्होंने पीटा सीआरपी वालों ने। पर आप यहाँ पे आए फाइनली मैं वहाँ पर पहुँचा। और तो यहाँ पे चलते हैं और आप ऐसे आते हैं? हाँ यहाँ से क्या था। आपको जब मारा इन्होंने यहाँ पे, हाँ फिर क्या हुआ? फिर जो बाइक का टायर है वो फिसला और हम गिर पड़े। उन्होंने मारा क्यों उन लोगों को? आपके जो आपको ले जा रहे थे हॉस्पिटल, उनको क्यों मारा? उनको बोलते मरने दो, इसको नहीं हॉस्पिटल ले जाओ, इसको हॉस्पिटल लेने मत दो, उसको मत ले जाओ। हेलो भाई साहब, get him. इन्ना सर, इन्ना प्रॉब्लम, इन्ना अच्छे। क्या बोल रहा है? बिहार से। यानी कि हिंदी तेरिया दे, इधर फोटो नहीं खींचना है, हिंदी तेरिया दे। इसका पहले था ऑपरेशन टांग बच गई, दूसरे दफा उनको लीक हुई, फिर किया मरहम पट्टी, तीसरे बार भी लीक हुआ, चौथे बार भी लीक हुआ, 5वें बार भी काट दी। और मुझे खुजली आ गई थी, यहाँ पर मुझे खुजली आ गई थी। जब मैंने ऐसे किया वहाँ पर कुछ नहीं। मेरे एक ही बेटा था तो वो इस लायक नहीं है, वो ये काम नहीं करता है, पैडों की काम करता है। मेरी छोटी बच्ची है, वो भी मेरी मदद करता है पेट पालने। अकेला हम घर नहीं चलाते। Sukul usna se? Kolma fakli. Kaç metan porça? Şey meta. Kaç porça? Bu esele vaka bu patronu. Mu ahe kan tu ta kare ke amse mujub. Amis mata den mujub tronu. In Delhi, I was invited by PSBT, that's a cultural organization, and Habitat Center. I was invited there to display my artwork. Since I am editorial cartoonist for Greater Kashmir, I have a daily column there, and I have to mail, cartoon to my editor every day. I went to a cyber cafe to mail my cartoon. I wrote my name on the registry. They have Sajjad from Kashmir and other things. They called the police. We have a Kashmiri here. He's doing some, online stuff. After like 10 minutes, police came, and it was a lady officer.
me. They were just looking at my camera, still camera, as if it was a bomb. They just grabbed me by collar and dragged me to the Lodi Road police station. I'm innocent, I'm this, I'm that. She started collecting this evidence. He was looking at the websites with diagrams of guns and some maps on it. This was her definition from a cartoon website, KashmirBlackandWhite.com. And I got so, nervous. I was like, no, that's, what? I told her, ma'am, you can call. And she was not listening to me. She was just, shut up. Then afterwards, they seated me near to a person who had dry blood everywhere on his face. After that, she took me to the Habitat Center. This मैं innocent हूँ, मैं Kashmiri हूँ, cartoonist हूँ. Look, you bastard, you speak so nice Hindi. Why you have problem to be with India? So I told her, ma'am, you mind your language now. You can see my artwork inside. I understand. So I yelled back at her that time. So my artwork was an installation. I had arranged these loops of barbed wire, and I had hanged some cartoons and photographs inside it depicting Kashmir story. Oh, look at this! Isn't this anti-India? And you bastard! Like it was just the name, nothing but name for me, the bastard. So I got so agitated. I just grabbed a stone lying in, near my installation, and I smashed some of the frames. I smashed it, and with the sound of the glass, everybody inside the auditorium, they just came out. And when this police officer, she saw all this crowd there, she just ran away from the spot. The security in the Habitat Center, they didn't let me move anywhere. They didn't let me use my email for 4 days. They didn't let me make a call to my mother that I'm fine. Let me put a cap here. This is a cap, Kashmiri cap. So it's a Kashmiri being tortured outside Kashmir, for example, Delhi or some other place. So he's being tortured, and he talks with his mother on the wireless, and he's saying to her, I'm fine, mom, it feels like home here. Don't worry. So it is outside Kashmir, because home, what is home? Home is also a torture cell, for a Kashmiri here. We have 500,000 troopers here. So it is also a torture cell. So it feels like a home, it feels like torture. If you really want to be in the place, not by chance but by choice, you need to rule, in my opinion, hearts. You can't just rule brains. For me, normal life is like when there's no distraction, when I can just concentrate on a chinar leaf, simplify it, and make art out of it, study the colors of place. But everything is dominated by these killings, curfews, crackdowns. I have no space, Unfortunately, India has never been able to rule the hearts of Kashmiris. That's a common fact. Kashmiris don't like India. Especially this generation has seen India as a person with a gun. For my friends, India is a BSF wala with gun, CRPF wala with gun. For him, India is not Ashwin. I have no identity this time, Outside I am being treated as a tourist. Here I am being treated as a slave. I need my space. Badly, we need it. We need it badly.